Now, in our yesterday lecture, we completed with the uh, economist view, which is one of the perspective of entrepreneurship. And today we are starting with another view, that is a psychologist view. In perspective of entrepreneurship, there are three different views I earlier said to you. First is economist view, second is psychologist view, third is socialist view. Now, in socialist view, we are seeing how entrepreneurship is viewed by the people in the society. Yeah, on the other way, we can say that what do the society expect from the entrepreneur? How they should go with, or what type of businesses they are expecting. So when we say that in a business, when the entrepreneur is coming up with a new type of product, yeah, new type of services, it would help in what? It would help in the satisfaction of the needs. When the entrepreneur or when the businesses do promise to the customer that they are delivering a particular type of product, or their product would satisfy that this different kind of need, then the product should actually satisfy that. Society want that whatever promises the business does to the members are kept by the businesses. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here in the socialist view, we are seeing that what society do prefer from the businessman. यहाँ पे हम entrepreneurship कह रहे हैं. Entrepreneurship is what? Is nothing but the process that the businessman do follow while doing the business. So this is what we say, that socialists consider the entrepreneur as a role performer. कौन सा role? So being a owner of the business, what do society expect from the business? They want that the businessman do design the various process, practices, technique, या come up with the product या services which do satisfy the needs of the people living in the society in the best way. Okay, so this is what? This is the expected role. They expect that the businesses do not harm the environment. They expect that the businesses do help in the upliftment of the society. We say about the living standard, yeah, we say about the generation of employment, and many other different type of expectation can be there. So what can be the different expectation? How the person will come to know that what the people living in the society do expect from them? So each and every society have the different type of customs. Okay, so society want that the businesses do respect the customs, do respect the tradition and the other thing. Now, beta, you know about the firm MACD? MACD, पता है MACD? हेलो, मैकडी में लोग क्या खाने जाते हैं ये बताइए? बर्गर, और फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज. स्पेशली फ्रेंच फ्राइज के लिए मैकडी ज़्यादा फेमस है, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज. तो जब हम मैकडी की बात करते हैं, आपको पता होगा ये इंडियन कंपनी नहीं है, इट इज़ अ फॉरेन कंपनी. ओके, एंड मैकडी की काफ़ी बीइंग अ फॉरेन कंपनी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी है इन द डिफरेंट कंट्रीज. इंडिया मैकडी इन अदर कंट्रीज जो उसकी फ्रेंच फ्राइज या बर्गर की इवन टिक्की जो तली जाती है वो किस में? इट इज़ इन बीफ. आई होप यू नो व्हाट इज़ बीफ. पता है बेटा? बेटा पता है या नहीं है? नो मैम. गाय की चर्बी को बीफ कहते हैं. तो सोचिए हिंदुस्तान में जहाँ पे गाय को पूजा जाता है, होली एनिमल माना जाता है, एंड इफ
मैकडी यानी जब मैं इनकी इंडिया के अंदर पहली बार आए तब की बात कर रही हूँ, तो इंडिया का मार्केट कैप्चर करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उन लोगों को? अपनी कुकिंग की स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी. Rather than frying in the beef, they have to fry in some another oil which is generally consumed by the people in the country. Then only, then only they can think of opening such things in the Indian market. Otherwise, people in India would not allow to get the franchisee open. Yes या no? Yes, ma'am. तो ये क्या है? मैकडी ने अपनी अपनी खाना बनाने का तरीका चेंज किया फॉर द इंडियन मार्केट, to establish that thing in India. So this is what is the thing expected from them is shown by the custom that the people do follow, the culture that they are in, the values that they have, the ethical things that they think of. Okay, so when we talk about the businesses should follow the social things, these can be understood by the business from the customs, from the rewards, from the restraint and nationalistic attitude of the people in the country for the product, for the services, yeah, for the processes will determine that what is the expectation of by the business for the different processes, for the different type of rewards. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जब पूरा साल काम करते हैं एंड व्हेन दे हैव परफॉर्म वेल, ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय वांट रिवॉर्ड, बोनस. समझ में आ रहा है? हर एक एम्प्लॉय Yes, चाहता ma'am. है ना कि जब वो अच्छा काम करे तो उन्हें बोनस मिले. तो बोनस इज व्हाट? बोनस इज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड. पर अब जब मैं किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे मेरा बिजनेस है, इफ इन माय ऑर्गेनाइजेशन इफ मोर आर द हिंदूज, then if I give bonus to the bonus in at the time of Diwali, they would be more happy. If there are more Muslims, if I give bonus at the time of Eid, they would be more happy. क्योंकि उस टाइम पे वो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो बोनस आएगा तो दे कैन एन्जॉय देयर फेस्टिवल एट द फुलेस्ट एक्सटेंट. समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्रिश्चियन है तो दिसंबर में मैं बोनस दूंगी तो दे वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज दे कैन स्पेंड मोर मनी इन देयर फेस्टिवल. तो ये क्या है? रिवॉर्ड है, बोनस है. पर फॉर द डिफरेंट कल्चर, फॉर द डिफरेंट कम्युनिटी, दे में एक्सपेक्ट कि ये टाइम पे मिले तो बहुत मजा आएगा, या हम इजीली अपना त्योहार मना पाएंगे. समझ में आ रहा है बेटा? Yeah. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so wishes of a society are exhibited through custom, through reward and restraint. ये नहीं करना है. जैसे मैंने आपके बीफ की बात की कि ऐसा होगा तो मार्केट में नहीं आ पाएगा, तो रिस्ट्रेन है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. इवन फूड एंड उसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं. हर एक गवर्नमेंट ने एक अलग अलग स्टैंडर्ड्स रखे हैं. बीच में कोको कोला कंपनी के लिए बहुत सारी चीज़ें आई थी. It contains certain pesticides or certain other type of things. इवन मैगी के लिए भी ये चीज़ आई थी कि मैगी के उसमें इट कंटेन सर्टन अमाउंट ऑफ लीड विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड शुड नॉट. आपको पता होगा कि मैगी काफ़ी सभी जगह से विड्रॉ किया था नेस्ले ने. हमें कहीं पे भी मैगी का पैकेट नहीं मिलता था. पता है ना बेटा? Yes, ma'am. So this is what I am talking about, that what is a society expecting can be known through all these different things, and by having an understanding of things, the businesses can follow what can follow the things which the society do expect from them. ओके, जब मैं डेवलप कंट्री की बात करती हूँ तो पीपल इन द डेवलप कंट्री मोर आर एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंपेयर टू द पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज. तो अगर मैं व्हीकल और इन सब की बात करूँ या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करूँ, तो इन डेवलप कंट्रीज देयर आर द स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एनी ऑफ द बिजनेसेस टू अंश्योर दैट दे आर नॉट कॉजिंग पॉल्यूशन टू द एनवायरमेंट. डेवलप कंट्रीज में प्लास्टिक की थैलियाँ मिलती ही नहीं हैं. There is totally banned and it is strictly followed. जो भी मिलता है पेपर
पेपर की थैली में मिलता है या टेट्रा पैक होता है विच इज़ इजीली डिकम्पोजेबल, या ऐसी चीज़ें विच इज़ इजीली डिकम्पोजेबल। कल मेरे घर में बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो जनरली जब पिज़्ज़ा आता है तो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं, एंड वो छोटे पाउचेस प्लास्टिक के उससे बने रहते हैं, बट टू माई सरप्राइज दिस टाइम द पाउचेस केम, जो चिली फ्लेक्स एंड द मिक्स हर्ब्स, they were made up of paper. And I was very happy that the businesses are following such type of things where we are saying that they, at least a small step by even a single business can make a lot of difference. So this is what restrain or the nationalistic attitude that the people do have, and when the businesses do follow such things, they may get more business from the people, because this is what is expected from by the people living in the society. So this is what we are saying in socialist view. We are saying that what all practices that should be followed by the business in order to what satisfy the social need. तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है सोशलिस्ट व्यू की। अब ये दो ऑथर्स का ही है जो हमें देखना है, या दो सोशलिस्ट का अंडरस्टैंडिंग हमें देखना है। पहला अंडरस्टैंडिंग हम देख रहे हैं पीटर मैरिस का। What do Peter Maris says? Entrepreneurship में what does an entrepreneur do? To assemble और reassemble. Assemble करना मतलब क्या? आप हम लोगों ने SPB के अंदर different type of industry पढ़ी है। इंडस्ट्री के अंदर हमने असेंबली लाइन इंडस्ट्री पढ़ी है ना बेटा, जहाँ पे हम कहते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं, मोबाइल के पार्ट असेंबल होते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड देन वी टेक chip from Intel, we take hard drive from somewhere else, we take motherboard from somewhere good company. So this is what we are assembling the part in order to make a unit. तो ये क्या हुआ? Assemble. तो एक बार assemble करने के बाद many times when we talk about the innovative product or the product, we are reassembling the thing. जैसे लोग ऑटोमोबाइल कार खरीदते हैं तो कार में फिर मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो ये क्या हुआ? रीअसेंबलिंग हुआ ना? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो असेंबल और रीअसेंबल किन चीज़ों का हो सकता है? ऐसी ही चीज़ें विच आर अवेलेबल. ओके, सो हियर अकॉर्डिंग टू पीटर मैरिज, टू असेंबल और रीअसेंबल फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल, वेरी concentrated kind of imagination to see what other have missed. अब आपको याद हो तो एंटरप्रेन्योर में हमने कहा था कि he is a person who look to the unrecognized opportunity. बैरिंगर रिस्क हमने देखा ना, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक उसमें. तो वी आर सेइंग दैट जब भी सी अनरिकग्नाइज नीड होती है मार्केट के अंदर, मतलब क्या है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आई है, एंड व्हेन द थिंग्स आर नॉट available, it means that when a particular business come up with a particular type of product or a service, it would be totally innovative, totally new. Why? Because such things were not there in the market, so they are coming up with a new thing. So when anybody has to come up with a new thing, first of all the thing has to be imagined. जब हम इमेजिन करेंगे तभी तो हम रियलिटी में ला पाएंगे, जब हम इमेजिन ही नहीं करेंगे तो हम रियलिटी में कैसे लाएंगे? जैसे टेलीफोन की हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन था ही, वायरलेस टेलीफोन्स भी अवेलेबल थे, बट किसी ने इमेजिन किया होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो कि सिर्फ एक किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में ही नहीं, पर एनीवेयर एनीबडी कैन बी कम्युनिकेटेड एट एनी टाइम. तो ये इमेजिनेशन था, इसीलिए मोबाइल डिवाइस आया. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, कंसंट्रेट काइंड ऑफ इमेजिनेशन टू सी व्हाट अदर हैव मिस्ड. इसीलिए अदर लोगों ने क्या मिस किया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर सेइंग कंसंट्रेट टाइप ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि हम एक मिसिंग पॉइंट को देख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम सभी मिसिंग पॉइंट को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जगह एक साथ नहीं पहुंच सकते, हमें एक को कंसंट्रेट करना होगा. सो वी आर सेइंग कंसंट्रेट काइंड ऑफ इमेजिनेशन.
जैसे मैंने कम्युनिकेशन में आपको मोबाइल की बात की, कंप्यूटर में हम डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप, फिर टैब, लैपटॉप में भी अलग अलग टाइप के, वी टॉक अबाउट टच स्क्रीन या फ्लिपिंग या अदर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. सो ये क्या है, कंसंट्रेटेड काइंड ऑफ इमेजिनेशन. हम किसी एक ही उसमें, एक ही प्रोडक्ट में या एक ही इंडस्ट्री में देख रहे हैं. समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. मैम, या बोलिए. मैम एक स्टूडेंट वेटिंग लॉबी में है, वो मैसेज कर रही है, उसको ऐड कर ओके लो ना. ओके ओके. So now we are saying to assemble or reassemble form of what is available. Very concentrated kind of imagination to see what other have missed. सेंसिटिविटी टू बिजनेस एंड सोशल एनवायरनमेंट. ये हम क्या देख रहे हैं, सोशल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. तो बिजनेस कितना सेंसिटिव है फॉर द सोशल एनवायरनमेंट. जैसे मैंने आपको पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल दिया कि वेयर आई फाउंड द थिंग्स इन अ पेपर. सो दिस इज व्हाट I am seeing that the business is sensitive towards the environment and coming up with the packing which is 100% decomposable. Okay, so sensitivity to business and social environment, then zest in the industrial development and entrepreneur courage are the factors that make the entrepreneur. That how well they would be able to recognize the unrecognized needs of the society and come up with the product or services which would help in better satisfaction of the needs of the people. So this is what zest, or we say that constant survival, constant growth of the business is what we say zest in the industrial development. Coming up of the variety of product is also in the industrial development, and seeing that the firm do survive or do grow in the industry is also an industrial development. And this is only possible with the entrepreneur courage. So we are saying that entrepreneur courage are the factors that make an entrepreneur. So this is what a view of Peter Marriage. Moving with another view, that is Derossi. So Felvia Derossi, what does the author says? Coordination at every stage. अब coordination किसका? Coordination of various factor of production. Every stage, what every stage का मतलब है stages of the business. तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस इज स्टार्टेड. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग अप ऑफ अ बिजनेस, इट इज टर्म्ड एज इंसेप्शन. ओके, तो व्हेन द बिजनेस इज हैव जस्ट स्टार्टेड, the type of resources we are coordinating, or the various strategies, procedures or techniques that are formed in order to ensure that the business would have certain market share or would have the people to buy the product. तो सी जब बिजनेस नया होता है ना, तो सबसे पहले तो फोकस इन मार्केटिंग क्या होता है कि पीपल आर अवेयर अबाउट कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है. पीपल आर अवेयर अबाउट कि ऐसी कोई कंपनी इज डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, एंड इफ अ प्रोडक्ट इज ऑल टुगेदर न्यू or innovative, then how the product is operated, how the product or what different type of needs or what particular type of need the product do satisfy when we use that product. ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो लोग यूज करेंगे, नहीं तो लोग क्यों यूज करेंगे. समझ में आ रहा है? यस मैम. सो इंसेप्शन, जब चीज़ें नई होती है बिजनेसमैन के लिए, आइदर बिजनेसमैन के लिए नहीं है या सोसाइटी, बिजनेसमैन और सोसाइटी दोनों के लिए नहीं है, तो द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, द वे ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड वी टॉक अबाउट द मैनेजरियल फंक्शंस वुड डिफर. ठीक है, इंसेप्शन होने के बाद वेर द बिजनेस इज अर्निंग सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अ हैंडसम प्रॉफिट which is ensuring good return to the entrepreneur. So this is what, first of all, once the business started earning, giving return, the entrepreneur wanted that such return should continue, at least this much return should continue, it should not fall. So this is what I am talking about, maintenance. And now the coordination of the resources at the maintenance would be different, because we would have more machinery or it would be operating at the higher efficiency. We might have more people or different organization, or we would have a hierarchy in the organization structure. So in inception stage, the things would be different in the internal environment.
as well as the external environment. During the maintenance stage, the things would be different. And then when I talk about the expansion, it means जब मैं edible items की बात करती हूँ तो if I am opening one unit in Kareli Bagh and after seeing that the unit is successfully running in Kareli Bagh, if I go and open the same type of other unit in Akota or in other place, it is termed as an expansion. Setting, having new people, having new machinery, having new one more additional place. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is what coordination at every stage, and different type of coordination is required. Yeah, different ratios of coordination will require. Why? Because at each and every stage we have a different thing to achieve. In inception, we want that people know, we want that people at least first time purchase our product, so that people do have an understanding how to use it. We want to increase the customer base. In maintenance, we want to see that the same customer do come and purchase our product. We want to maintain our customer base. And in expansion, we want to increase our customer base. So here at both, at all the three levels, we have the different thing that we want, and so the coordination would also differ. The managerial functions will also differ. Okay, and when we talk about all these things in the business and from the society point of view, now Darossi says that at least two qualities are required in an entrepreneur. What are they? First is optimistic outlook. Now what is an optimistic? Optimistic का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे ढूंढ के. When we talk about the optimistic मतलब क्या? Hopeful and confident about the future. So दूसरा understanding we can see uh, often estimated unrealistically high. Previous estimate of okay, so now we are talking about coming up with the high estimates. So when we talk about the high estimate, uh, again, do you have you seen the film Bahubali beta? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब बाहुबली में जो लड़ाई का सीन था, जब हम देख रहे हैं कि वन किंग, ओके, जिसकी आर्मी छोटी है, ओके, दूसरी आर्मी बड़ी है, एंड उन्होंने एक जो माइलस्टोन था वो तोड़ दिया है, यानी एक लेवल पार कर दिया है. सो बाहुबली आर्मी इज लूजिंग, वेर हमने देखा कि एक उनका जो लेवल था जो उन्होंने रोकने के लिए बनाया था कि दूसरी एनिमी अंदर एंटर ना कर जाए, वो टूट गया, एंड द पीपल वेर अफ्रेड एंड देन दे वर रनिंग बैक टू सेव देयर लाइफ. नाउ सी, एक राजा जो ये देख रहा है कि उनका एक लेवल टूट चुका है, लोग डर चुके हैं कि अभी मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए, एंड देन अगेन जनरेटिंग दैट एनर्जी, वो वहाँ से भागता भागता हूँ वहाँ पे उन लोगों के पास आया इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम कि हम जीत पाएंगे, हम करेंगे, हिम्मत मत हारो, द all the dialogues remembered. So this is what एक होपफुल व्यू, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू कि हम हारेंगे, पर हम इस तरीके से, अगर हम हारे तो भी इस तरीके से हारना अच्छा नहीं है. वी हैव टू फाइट बैक. क्यों हारेंगे, हम जीत सकते हैं. एंड दिस इज हाउ अगेन बाहुबली की जो आर्मी एक टाइम पे होप खो चुकी थी, दे रीगेन द होप, दे फाइट बैक एंड दे वॉन द बैटल. हमने देखा. सो व्हाट इज इट? वंस at least the people should have an optimistic view that they can bring the changes. सो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. वी सॉ दैट इन द economist view, we saw that people has to put in the lot of efforts because they have to meet the future requirement and the future is dynamic. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. So here we are saying optimistic outlook that there is a possibility of change. सी, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें अनरिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी मीट करना है, तो हम मीट कैसे कर पाएंगे? थ्रू इनोवेशन. जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली द चेंज डू कम. चेंज नहीं होगा तो इनोवेशन कैसे होगा?
एक नई सोच, एक नया तरीका प्रोडक्ट बनाने के लिए या नई प्रोडक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन द हैबिट ऑफ द पीपल सो दैट दे वुड बी अडॉप्टिंग आवर प्रोडक्ट. So, an optimistic outlook that there is a possibility of change and he himself can introduce the required change. So, if this thing is there in the mind, and not only in the mind but they also put up the efforts in order to attain it, then only the business would be able to coordinate, or the business person would be able to coordinate at the different stages and would be able to एक स्टेज पार करना, would be able to achieve their target in the different stages. Clear with this? Clear, better? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now moving ahead with another thing कि in a sphere of dynamic as industry. अब dynamic क्यों कहा? अगेन आपने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, जब हम चीज़ों को फ्यूचर के साथ लिंक करते हैं, फ्यूचर अनसर्टन है तो एनवायरनमेंट भी अनसर्टन रहेंगे. जब चीज़ें अनसर्टन है इसका मतलब क्या है? डायनामिक, एवर चेंजिंग. Okay, so in a sphere of ever changing industry, a new problem are seized as an opportunity. Problems आती रहेगी, पर उन प्रॉब्लम्स को एंटरप्रेन्योर क्या, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या देखेगा? एज एन अपॉर्चुनिटी. जैसे कोविड आया, कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड पूरा वे ऑफ डूइंग बिजनेस या वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैज़ टोटली चेंज. जैसे हम लोग 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दूसरे जैसे हम होटल इंडस्ट्री या अदर टाइप ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे लोग खाना खाने जाते थे, दे हैव कम अप विद द टेक अवे. व्हेन आई टॉक कि बिजनेस करना है तो नया तरीका, नए मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे, देन ओनली द पर्सन वुड बी एबल टू डू इट. सो ये क्या है? एक डायनामिक स्फीयर. इंटरनल एनवायरनमेंट भी डायनामिक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी डायनामिक है. आप लोगों ने देखा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में, वेयर वी टॉक अबाउट द रिस्क. कल भी मैंने थोड़ी बात की थी इसके बारे में. सो इन स्पीयर as dynamic as industry, new problems do arise, and a good businessman sees this problem as an opportunity. एंड जब हम प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब क्या है? बिजनेस के अंदर उन प्रॉब्लम्स को से लड़ने के लिए वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस, and the person do have the capability, do have the intelligence, or would be able to coordinate different resources in order to bring the required changes, in order to grab the opportunity, या in order to overcome the threat. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, so this was a socialist view. Moving ahead with the psychologist view. Psychologist मतलब psychologically how the entrepreneur should be in order to handle various things. So now we would be seeing 4 different psychology के view, psychologist के view है, पर हम 2 एक साथ हैं. So हम 3 देखेंगे view of the psychology. So Frank Young क्या कहता है? What is a quality that will help the entrepreneur to be to perform the entrepreneurship process? So first is what he says as an entrepreneur should be a change agent. और क्यों change agent? हमने social view में देखा, where we talk about the dynamic environment, where we talk about should have the optimistic outlook, not output. So this is how we say that if the entrepreneur do have an understanding about where, how, when the changes are required, and also have a capability to meet the resistance to change, in that condition he would be more successful. Either we talk about the inception phase or maintenance phase, or what was the last type of phase, the expansion phase. So this is what Frank Young described the entrepreneur as a change agent. Any problem in understanding it? Change agent का बेटा काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे भी देखी, where we talk about the dynamic industry में changes लाना क्यों ज़रूरी है. यहाँ पे भी हमने देखा कि क्यों change लाना ज़रूरी है, changes क्यों important है. Clear with it? Shall I move Yes, ahead? ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब हम बात कर रहे हैं के एल शर्मा की. तो के एल शर्मा क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स आर मैन विद द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. अब देखिए, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे. एम्प्लॉयज़
है वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बनाई किसने? एंटरप्रेन्योर ने। यस, समझ में आ रहा है? समझ यस में आ रहा मैम। है? तो ये क्या है? ये एक लीडर और फॉलोवर जैसी रिलेशनशिप है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर लीडर है जो कहता है कि ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके से करिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करे। ऑर्गेनाइजेशन बनाया किसने? एंटरप्रेन्योर ने। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव किसने डिफाइन किया? एंटरप्रेन्योर ने। तो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करेगा तो हु इज अचीविंग द ऑब्जेक्टिव? एंटरप्रेन्योर। अब आप लोगों को आप लोगों ने शायद पीके मूवी देखी होगी, देखी है ना बेटा? पीके। यस मैम। अब पीके के अंदर जब गुरुजी के पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे, गुरुजी इज अ लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, एंड द फॉलोअर्स कमिंग अप टू गुरुजी विद द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम हमने भी सुनी थी, जहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी, अपनी वाइफ बहुत बीमार थी, तो और उसने सारे तरीके ट्राई कर लिए, वेंट टू डॉक्टर्स एंड ऑल दिस, फिर भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। सो ही टोल्ड गुरुजी, अब गुरुजी क्या करें कि मेरी बीबी ठीक हो जाए? तो गुरुजी ने भगवान के साथ बात करके बताया कि इतने दूर एक मंदिर है, वहाँ पे आके ये चीज़ें करो, तब आपकी बीबी ठीक होगी। तो अगर अगर पीके उसे नहीं रोकता तो बंदा वो फॉलो करता? हाँ या ना? बेटा मूवी देखी है तो ये सीन याद आया मैं जो बोल रही थी? हेलो। यस मैम। तो आपको पता होगा कि पीके ने उसे रोका कि अभी मत जाइएगा, ये कुछ गलत हो रहा है। भगवान होते तो ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो, भगवान खुद कहते हैं मैं सभी जगह हूँ, तो फिर आपको इतनी दूर क्यों बुलाते हैं? ये कुछ गलत है। तो सी, जब एंटरप्रेन्योर लोगों को हायर कर रहा है, हमने आगे देखा मैनेजर्स को हायर करता है, सो मैनेजर्स आर द इंटेलिजेंट पीपल। They have their when the entrepreneur is saying that this is a target that we want to achieve, managers are aware about what are the resources they have and whether they would be able to achieve it or not with such resources, or what more things are required, कितना फाइनेंस कहाँ पे किस तरीके से। ठीक है? तो जैसे हम there can always be a dispute or a difference in the opinion between the managers as well as the entrepreneur। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस मैम। जैसे हमारे घर में भी जब हम कुछ डिस्कशन चल रहा हो, मॉम डैड है या बड़ा भाई है, बहन है और हम हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना। हमारा बड़े भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, और इवन मॉम डैड से भी होता है, दादा दादी से भी होता है कि आपके ज़माने में ऐसा होता होगा, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता, वी विल फॉलो सच थिंग्स। होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यस मैम। सो सी, एक लीडर है, उसके फॉलोअर्स है, तो लीडर को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि फॉलोअर्स उसे अनकंडीशनली फॉलो करें। जब फॉलोअर्स उसे अनकंडीशनली फॉलो करेंगे तभी तो लीडर अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा। यस, क्लियर? यस यस मैम। तो यहाँ पे जब फॉलोअर्स क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ आते हैं लीडर्स के सामने, तो लीडर्स whatever decision he or she has taken, that the thing should be done in this way or this should be processed, this should be practiced, should be based upon certain फैक्ट्स फिगर्स या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की वो फॉलोअर्स को समझा पाए कि ये है, और जब उनके समझ में आएगा तब वो चीज़ें अनकंडीशनली फॉलो करेंगे जो लीडर ने कहा ये काम इस तरीके से ऐसे करो। तो ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल खूबी इन अ लीडर। सो हियर के.एल. शर्मा सेज एंटरप्रेन्योर are the men with the quality of leadership in solving persistent professional problems। कैसे problems? मैंने अभी बताया, followers may not be ready to follow, और followers come with the cross questioning, या followers समझाने के बाद भी अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो then how to do, हम उन्हें किस तरीके से हैंडल करें ताकि वो उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो persistent professional problem and demonstrate eagerness
टू सीज द अनयूजुअल अपॉर्चुनिटी, यानी अनयूजुअल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना विद द हेल्प ऑफ द एफर्ट्स पुट इन बाय द फॉलोअर्स। क्लियर? क्लियर बेटा? बढ़ूँ आगे? यस मैम। ओके, अब अनदर व्यू, या थैंक यू, अनदर व्यू है टीवी राव एंड उदय परिक का। वो क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप एज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स। अब क्रिएशन और इनोवेशन क्या है ये मैंने आपको बताया। क्रिएशन इज थॉट and implementation of that thought into reality, maybe process, maybe product, maybe service, maybe technique, anything is termed as an innovation. So entrepreneurship as a creative and innovative response to the environment. कौन सा environment? दोनों ही, internal and external, क्योंकि दोनों ही environment ever changing है। external comparatively ज़्यादा dynamic है compared to internal, क्योंकि internal environment is under the control, पर चेंज तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है। सो हियर चेंजेस है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि उन चेंज को हम हैंडल कर पाए। ही इज गोल ओरिएंटेड रादर देन मीन्स ऑफ गोल, कि हमें क्या हासिल करना है, ये दैट इज व्हाट वी से एज गोल ओरिएंटेड। किस तरीके से करना है? सी, एक when we set a goal there would be the different ways to achieve it. Yes or no? The entrepreneur might be having in their mind that this is a way which should be achieved. The managers, the different managers or the employee feel that their way is better than what is suggested by the entrepreneur, and so they want to follow their way. So if through negotiation, yeah, through communication, through conversation, if the things are fine, entrepreneur sees that goal would be achieved, entrepreneur sees that it would be within the time, entrepreneur sees that if there is okay, there is a difference in the method, but it is according to the value, according to the ethics or the other things that he want. What is the difference? Let them do the thing in that way rather than emphasizing that do the thing in this way. So here is what he should be goal oriented rather than means oriented, कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है? Clear with this? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, moving ahead with another thing, must not only have capacity of risk taking. रिस्क टेकिंग, जब हम बिजनेस करते हैं तो रिस्क ले रहे हैं ना, एंटरप्राइज शुरू करने का हमने देखा। दूसरा, अगर हम कोई नया चेंज भी ला रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क वेदर इट वुड बी अडॉप्टेड और नॉट। सी, कई बार प्रोडक्ट के अंदर चेंज लाते हैं एंड देन पब्लिक डू रिजेक्ट दैट प्रोडक्ट एंड कंपनी हैज टू टेक अवे और टेक बैक ऑल द गुड्स विद दैट पर्टिकुलर चेंजेस। होता है ना? तो रिस्क है ना कि वेदर इट वुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। Not only doing a business is a risk, but also coming up with certain innovation in the process, in the technique, or in the product itself is also a risk. So must not only have the capacity of risk taking, but must also have a high capacity of risk sustaining. रिस्क लेने के बाद उस रिस्क के साथ जीना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस, जितने चेंजेस उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतने ही न्यू टाइप की सिचुएशंस आपको मिलेगी एंड हैंडलिंग द डिफरेंट सिचुएशंस विल रिक्वायर द डिफरेंट टेक्निक्स. So sustaining the risk is really difficult than taking a risk. So here we say psychologically entrepreneur not only should be such a powerful to take a risk, but also should be such a powerful person who can sustain that risk, with which call a high degree of self confidence. क्योंकि इनोवेशन है या रिस्क है तो मुश्किलें आएगी ही आएगी। एक मुश्किल को ख़त्म किया, दूसरी मुश्किल आपके सामने, दूसरी को ख़त्म किया, तीसरी सामने। सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जितनी भी मुश्किल आए, आई विल फाइट इट एंड आई विल अचीव द ऑब्जेक्टिव. then only the person can cross through the various stages जो हमने कहा, inceptions या maintenance या expansion. Clear with this? Clear यस बेटा? मैम। Okay. So moving ahead with the second last slide of today's lecture, जहाँ पे हम देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अभी तक हम एंटरप्रेन्योर एंड वी सॉ अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? जो मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा, प्रोसेस. कैसी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑपरेटिंग एंड अज्यूमिंग ऑफ रिस्क. किसकी? बिजनेस वेंचर की. एंड रिस्क के अंदर
इंसेप्शन, मेंटेनेंस, सर्वाइवल, चेंज, ये सभी रिस्क है. Internal environment, external environment, all these things are covered in it. Clear with it? Clear, beta? First point. Shall I move with Yes. second? Okay. Yes, ma'am. The process of bringing together. अब हम अलग अलग resources को इकट्ठा कर रहे हैं. Factor of production की बात कर रहे हैं. Process of bringing together. Okay. Then process of bringing together, maybe we are talking about, can be said as the different employees working in the organization, and we want that they all work collaboratively, cooperatively. आपने HRM में पढ़ा है. So a process of bringing together creative and innovative ideas. So now चेंजेस अलग अलग फेसेस में हो सकते हैं. तो अलग अलग फेसेस में रिस्क है, अलग अलग फेसेस में चेंज लाने पड़ रहे हैं. तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द पर्सन इज क्रिएटिव. When I'm talking about innovation, it is only possible with the help of creativity. कुछ नया सोचोगे तो नया करोगे, नया सोचोगे ही नहीं तो किससे नया करेंगे. So the process of bringing together creative and innovative ideas and action with the management and organizational skills. तो हम कैसे इकट्ठा लाएंगे with the management and organizational skills that is necessary to mobilize the appropriate people, जो मैंने आगे बात की, money and operating resources. अब इन सबको साथ में लेके what we can get, we can meet the identifiable needs. See, whenever any business set up a goal, set up an objective, this is what identifiable things. जब हमने unrecognized opportunity को recognize किया, now we have identified, so it is an identifiable needs, that what do people want and how our product or how our service would be able to satisfy that. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes. And now, by meeting the identifiable needs, what will happen? We would be able to make profit out of it. Identifiable needs को जब हम meet कर पा रहे हैं, तो we would be able to make profit out of it. Our business would be successful, inception phase successful, maintenance phase successful, expansion phase successful. So this is how we talk about create wealth in the process. So this was about a second point. Third thing, it is a combination of creativity and management. It refers to the development of management skills. Management skills में what are the we talk about planning, organizing, directing, controlling. These are the management thing. Okay. Skills के अंदर आपने पढ़ी होगी technical skills, conceptual skills and human relation skills. Okay. So we are going with the management functions. We are talking about the management skills. A production manager will have the production skills, technical skills, will have a good human relation skill and the conceptual clarity, so that through proper planning they can go, proper planning, organizing, directing and controlling, they can go with the efficient utilization of the resources allocated to the department. Similarly with other things. So it refer to the development of management skills. ये तो मैंने आपको managers की बात करी. But as entrepreneur is putting up the money, identifying whether the resources should be bought or not. See, manager कहेगा पर ultimate decisions तो entrepreneur का होगा ना. So entrepreneur also required to manage the managers. समझ में आ रहा है? इसीलिए मैनेजमेंट स्किल्स की हम बात करें. मैनेजिंग द मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, वी टॉक अबाउट द वेरियस कंसेप्चुअल, टेक्निकल और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स इन एंटरप्रेन्योर टू. So we say development of management skills required to smooth the functioning. Management skill क्यों चाहिए? We want that every function of the businesses should run smoothly. Okay, different manager do understand, and we can go with cooperation, coordination. So management skill is required in the entrepreneur for that thing. So required for smooth functioning of business enterprise. Administrative skills किसके लिए? To maintain the efficiency. And creative and innovation skills किसके लिए? To relate the organization with the environment. Environment again ever changing, इसीलिए हम कह रहे हैं ever changing environment की needs को meet करने के लिए या opportunity या threat को meet करने के लिए we talk about creative and innovative skills. Clear with this? Yes, ma'am. Okay, so moving with the last slide of today. अब हम इंट्राप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं. मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था. इंट्राप्रेन्योर मतलब क्या? A person who is an employee of the organization and is at a higher position.
मैंने आपसे ये भी कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसके ओनर कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो डिसीजन लेते हैं हम कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, किस प्रोडक्ट में आएगा, किस तरीके से करेंगे, वो सारे डिसीजंस कौन लेता है? CEO ऑफ अ कंपनी। ओके, सो CEO is termed as an intrapreneur who gets salary from the company. So CEO is taking all the decisions like an entrepreneur, and उससे जो कंपनी को फायदा होगा या कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, तो कंपनी की वेल्थ बढ़ने से अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ना कि CEO को। CEO की सैलरी बढ़ेगी, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, द रिटर्न, द मोर रिटर्न that is received by the whom? By the shareholders, not the CEO. अगर CEO के पास शेयर है तो उसे मिलेंगे, पर अगर मैं सिर्फ सैलरी की बात करूं, the return of the company is given to the shareholders, to the owner of a company, not the employees of a company. And employees get a return in terms of increase in the salary. समझ में आ रहा है बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. So here, intrapreneur कौन है? Intrapreneur are persons who are working in the existing organization and foster organizational innovation by assuming entrepreneur role. तो organization में innovation लाना, ये कौन कर रहा है? Intrapreneur. Okay, assume by assuming an entrepreneur role. हमने आगे देखा कि बिजनेस के अंदर इनोवेशन कौन लाता है? एंटरप्रेन्योर। पर जब हम इंट्राप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो शेयर होल्डर्स अब कैसे इनोवेशन लाएंगे? दे आर, इट इज ऑल अपॉन द CEO who will think as an entrepreneur and bring innovation, and this will lead to increase in wealth of the business. So intrapreneur is a person who focus on innovation and creativity and who transform a dream or an idea into profitable venture. ओके, जैसे शेयर मार्केट के अंदर पहली बार जब कंपनी लॉन्च होती है, अभी कंपनी बनी भी नहीं है, with the wealth acquired by the shareholder, the company will start. तो ये क्या हुआ? एक जो ड्रीम, एक आइडिया जो वो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या हम कहें प्रोस्पेक्टस में डालते हैं, वो एक ड्रीम, एक आइडिया को रियलिटी में ला रहे हैं. So entrepreneur is a person who focus on innovation and creativity and who transform the dream or idea into a profitable venture by operating within the organizational environment. क्यों? Because they are the employees. In terms of introduction, this particular term was introduced by Gordon, और इन्होंने इस क्या डिफाइन किया एंटरप्रेन्योर के लिए? Those who take hands-on responsibility by creating innovation in any kind within the organization. Okay, so here also we are saying that the intrapreneur are the people who would be taking care of the innovations that are required to be done in the business environment. And as we talk about the intrapreneur, they are the employees, they are the CEO of a company at a higher level. So entrepreneurship is a practice of innovation by developing new product, process or service while one is a part of organization. One मतलब क्या? I am talking about intrapreneur. So intrapreneur is developing, coming up with the innovation, developing a new product or process or service or any of the thing, even though they are the part of organization. So intrapreneur, even though they are the part of the organization, they are thinking from the point of view of entrepreneur, that if a business owner would be there, what decision he would take, how, what in pertaining to the innovation, pertaining to the another things which would lead to the success of the business. Either we talk about inception, maintenance as well as growth. Clear up till now, Vita? Yes, ma'am. यस Okay, मैम। so with this, we are completing with the lecture, and in our next lecture, we will move ahead with the difference between entrepreneur and intrapreneur. That is, next Thursday, we would be starting with the difference between entrepreneur and intrapreneur. Clear? ओके Yes, मैम। ma'am.